Less than a day to go for Border-Gavaskar Trophy, the most important series to commence, and the excitement, the build-up, and everything is there. It's just a matter of time where the teams lock horns. And to cover the technical aspects of the Border-Gavaskar Trophy's first test, which is happening at Perth, me and Sushank are going to cover the entirety of the technical aspects in terms of the ground, how it has performed over the last few matches, who has scored, who has taken wickets, and what is going to be the probable lineup for India. So, a lot to discuss, and I welcome Sushank on this amazing segment of ours. Thanks, Yashaswa. As promised yesterday, we are back with a statistical podcast. Yeah. So, I was pretty much down the weather, but had to cover down under, and that is what makes us makes this series a very interesting one, because I was pretty much in the bed for the entire day, and I was like नहीं सुशांक was mentioning कि यार नहीं करते यार, इसको रहने देते, कोई बात नहीं, you take care of your health. बट मैंने सोचा नहीं Correct. यार, अगर ये नहीं करूंगा तो फिर वो लिंक टूट जाएगी. And these are the reasons that motivate me to go on and do certain things which are important to me and Sushank. So here we are to cover the technical aspects. So walk us through, Sushank. Uh, See, the first test is happening at Perth. We discussed that very much yesterday. Perth has two grounds now. The ground that we played in 2008 was a completely different ground, and this ground, the Optus Stadium, अब तक यहाँ पे 4 मैचेस हो चुके हैं और उसी 4 मैचेस को हम लोग डाइसेक्ट करके आज जो डेटा है वो आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, विच विल गिव अस अ फेयर आइडिया कि कल से जो टेस्ट मैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो किस तरह जा सकता है करके. To start off with, yes, so 4 matches have been played over here. Not to say they all featured Australia, and Australia has a 100% winning record over here. So in these 4 matches that Australia has played four, won four. India played a match over here in 2018, and we lost that match. Yeah. So no, no doubt we know the reason why they are starting from Perth. But then Kohli scored 100, so that is going He to did, be, yeah, yeah, that is going to be one positive part if we take away the memories of 2018-19 from Perth. correct. Now, since you're talking of runs, let's move to the runs bracket now. That how the ground has performed in terms of scoring runs, innings wise. So, if you look across briefly on this ground, in the 4 innings, the average first inning score is 457 runs. Second inning score is 251. Third innings is 219, and fourth innings is 183. And that was the prime reason yesterday we were discussing that if you win the toss, bat first and bat more and bat score the highest amount of runs because the difference is quite evitable over there. एग्जैक्टली. सो सुशांक, ट्विटर में मेरी बात हो रही थी दोस्तों से. देवर लाइक कि Mm-hmm. ओवरकास्ट कंडीशंस रह सकती है तो वी शुड गो फॉर Correct. बॉलिंग फर्स्ट. मैंने बोला यार देखो, ये सब बॉलिंग बॉलिंग इज अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वैसा रहेगा, पिच फास्ट रहेगा, बट इफ यू लुक एट द प्रीवियस स्टैट्स, द स्टैट्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ इन वेरी हाई नंबर्स. Yeah. सो वी कैन नॉट Correct. टेक अवे द फैक्ट कि फोर्थ इनिंग्स का जो टोटल है, इट इज क्रेजी. वी कैन नॉट चेज मोर देन 200 रन ओवर देयर. सो Correct. कैसा रहेगा कि क्रैक्स बहुत भयानक बिल्ड होते हैं. ऑल्दो आइजैक मैकडोनाल्ड, द पिच क्यूरेटर, हैज मेंशन्ड कि कंसिडरिंग द वेदर कंडीशंस पिच होल्ड करेगा. बट वी हैव सीन ओवर द इयर्स कि स्नेक क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, और मतलब कुछ वीडियोस मैंने देखे, देवर क्रेजी द अमाउंट ऑफ टर्न. आई मीन वी टॉक अबाउट रैंक टर्नर्स इन इंडिया, बट एक बार लोगों को यहाँ के स्नेक क्रैक्स देखने दो, देन दे रियलाइज कि नहीं यार, मतलब फोर्थ इनिंग्स कितना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर रन बनाना, एंड विद दैट अमाउंट ऑफ पेस एज वेल. वो स्टार्क वर्क का Correct. मैंने वीडियो देखा नेट्स में, ही वाज बॉलिंग टू ट्रेविस हेड. ट्रेविस हेड का पुराना वीडियो देखा, ही वाज स्मैशिंग एवरीथिंग. व्हेन Yes. स्टार्क वाज बॉलिंग टू ट्रेविस हेड, भाई वो दे शॉर्ट शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल, हिज पेस हैज इंक्रीज्ड आई बिलीव, स्टार्क Yes. का Yes. 2-3 किलोमीटर पर आवर. तो थिंग्स आर लुकिंग ओमिनस, बट देन एज यू राइटली सेड, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, दैट शुड बी द मंत्र. आई थिंक जैसे हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था यशस्व, इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ एवरी सेशन. सो सेशन बाय सेशन खेलना होगा. लाइक फर्स्ट इनिंग में भी आपको पहला सेशन निकालना पड़ेगा. अगर वो फर्स्ट करेक्ट. सेशन हमने निकाल दिया, बिकॉज सी वी आर गोइंग टू फेस एन ऑस्ट्रेलियन टीम, इवन इफ अ क्लाउड कवर, द क्लाउड कवर नॉर्मली हेल्प द बॉल टू स्विंग ऑन बोथ वेज. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को देखेंगे, सो दे डिपेंड हेवीली ऑन लैटरल मूवमेंट. अगर हेजलवुड और कमिंस को देखेंगे, दे आर वन स्पॉट बॉलर.
वो जैसे मैग्राथा एक स्पॉट लेंगे और उसी स्पॉट पे डालते रहेंगे। स्टार्क का एक ही है, द बॉल कमिंग इन, अगर वो अवॉइड कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहीं पे देखिए, yesterday I saw this small brief interview of Yashasvi Jaiswal, who looks very very determined to go out over there and perform. फर्स्ट इनिंग में करेक्ट होगा कि नहीं होगा जानता है, अब लाइक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टैम्प द ऑथोरिटी। तो वो सिर्फ पहला सेशन जो होगा ना, और अगर क्लाउड कवर है देन 100% आई थिंक इट गिव्स एडवांटेज टू अवर बॉलर्स। वर्स्ट के सिनेरियो अगर हम लोग टॉस हार गए तो, बिकॉज हमारे पास सिराज बुमराह ये दोनों स्विंग बॉलर्स, सो राइट उनको उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक वेदर वेरेवर द टॉस गोज शायद हमको फायदा हो सकता है, बट इफ यू विन द टॉस आई थिंक यू शुड बैट फर्स्ट बिकॉज स्टैट्स हैव बीन टेलिंग अस द सेम थिंग। करेक्ट एंड एंड सिर्फ यही एक नहीं है यशस्व, इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैट्स जो कहता है कि ऑन ये है ऑन एन एवरेज स्कोर कितने होते हैं। बट अगर हम लोग देखे जाए, इनिंग्स बिल्ड होती है पार्टनरशिप से, एंड वी करेक्ट ऑलवेज से कि 50 रन फिर 75 फिर 100। तो अगर कोई बैट्समैन 50 बनाता है तो उसके ऊपर ही गेम चलता है, बट गेम दोनों एंड से चलता है। तो अगर हम लोग देखे जाए कि इस पर्थ के ग्राउंड पे ऑन एन एवरेज 50 प्लस स्कोर्स कौन से इनिंग्स में ज्यादा आए हैं, so the stats for the last four test matches they tell us कि फर्स्ट इनिंग्स में on an average 2.5, which means 2 से 3 हाफ सेंचुरीज फर्स्ट इनिंग्स में आती है, 1 से 2 सेकेंड इनिंग में आती है, थर्ड इनिंग में भी 1 से 2 आती है, लास्ट इनिंग में सिर्फ आधी आई है। और वो आधी वेनाई से ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का मैच था पिछले साल जो हुआ था, वहां पे ब्रैकबेट ने खाली एक सेंचुरी मारी थी, जिसकी वजह से ये 0.5 आया हुआ है करके, वरना कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी है करके। सो दिस इज द रीजन, not just runs, but in terms of partnership as well, it's first innings. All right. So it's a very interesting stat, and something that was missing in India New Zealand series, because Yeah. as you mentioned that you have to build the innings from 50 to 75, from 75 to 100, and so on. So this will be very important. The patience, and that is where I believe KL Rahul's temperament is going to come in handy. A lot of people are sidelining him out. Uske baad he becomes a very easy target for a lot of people. But the technical abilities that KL Rahul has, I believe these are going to come in very handy this time around. I completely agree with you, Yashaswa. At the same time, the coin has both sides. The fan, I think they have been a bit harsh on KL Rahul, but then I think the time, kind of talent he possesses, और जो उसने natural ability दिखाई थी, I think it is big time for him to come good right now because there are so many youngsters waiting in the corridor, and it's high time for Rahul to come out and ensure and show us ही कैन परफॉर्म विद दिस टेक्निकल एबिलिटीज। क्योंकि यार अगर आपके पास सब एबिलिटीज है बट वो स्कोर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है, तो फिर उस एबिलिटीज का होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ क्वाइट लॉन्ग Correct. रन दैट ही हैज बीन गेटिंग, एंड ही इज नॉट न्यू टू दिस ऑरा। लाइक वो ऑस्ट्रेलिया पहले आ चुका है करके, सो दिस इज नॉट लाइक सरफराज खान और ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल जो फर्स्ट टाइम आए हैं। So players like Shubman Gill, KL Rahul, Virat Kohli, who have been playing in Australia for more than months, they have to step up now. Exactly, exactly. बट ये So ये हो गया basically, हमारे बैट्समैन का। Yeah. राइट राइट, ये तो रन्स का हो गया। आई वांटेड टू स्पेसिफिकली नो अबाउट द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज पूरा हाइप बॉलर्स पे है, पूरी सीरीज का हाइप Correct. पूरा बॉलर्स पे है, पर्थ स्पेसिफिकली। सो प्लीज लेट अस नो हाउ द स्टैट्स आर गोइंग टू बी। सी हम टेस्ट मैचेस में बैटिंग की कितनी भी बात कर ले यशस्वा, मैच तभी जीतते हैं जब 20 विकेट्स मिलते हैं। तो राइट। ये खेल सिर्फ 20 विकेट्स का है। एंड अगेन इफ वी गो बाय स्टैट्स इन द लास्ट 4 टेस्ट मैचेस, वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ पेस वर्सेस स्पिन। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट्स हैव गॉन टू पेस एंड अ सिंगल विकेट हैज गॉन टू स्पिन। In the second innings, 6 to pace and 4 to spin. Third innings, 6 to pace and none to spin. And fourth ओके। innings, 7 to pace and 2 to spin. तो अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे टोटल 10 नहीं बन के आ रहा है, खास करके फर्स्ट और थर्ड इनिंग में। इसका रीजन था ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स दोनों में डिक्लेयर कर दिया था 2 विकेट्स एंड 4 विकेट्स डाउन पे, तो जिसकी वजह से एवरेज विकेट्स कम आ गई है। बट यहाँ ओके। पे एक मेजर रोल प्ले करता है पेस बॉलर। एट द सेम टाइम स्पिनर्स हैव आल्सो बीन पिकिंग विकेट्स ओवर हियर, एंड व्हेन वी गो टू अवर आगे के स्लाइड्स, यू विल कम टू रियलिटी अबाउट अ स्पिनर जिसके लिए एक हंटिंग ग्राउंड रहा है ये। विल शेयर दैट एग्जैक्टली। विद यू ऑलवेज वेल। बट एज ऑफ नाउ इफ यू सी,
The first inning, it is all about pace, 7 wicket to pace and 1 wicket to spin. So यहाँ पे pace 100% हावी है, but you cannot ignore spin completely as well. Correct, correct. सो दिस अगेन ये सब ग्राफिक्स को कोलेट करके हमने एक ही पेज में डाला हुआ है. सो Mhm. पीपल हु जस्ट वांट टू सी अक्रॉस के कौन से इनिंग्स में रन बनते हैं, कौन से इसमें फिफ्टीज निकलते हैं, पेस और स्पिन, एक ही पेज पे आपको सब डेटा यहाँ पे मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट द डेटा स्टेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग. So if you talk about the first innings and second innings, Sushant, the average run scoring is very. I mean, the difference between the average run scoring is pretty high, Quite a bit. and that sets Yeah, the entire tone of the test match. correct. If one team is scoring 400 and then the other team is getting wrapped up at 250, that's a lead of 150. So when Correct. This the is other huge. team is coming to bat in their second innings, they already have an advantage of 150 runs plus a psychological barrier has been crossed for them. नहीं यार मतलब इतना बन गया है अभी मतलब it is like 50% in our bag now. And then the Completely fact agree with you. then the fact कि फोर्थ इनिंग्स में उस टीम को वापस बैट करना है एंड व्हेन वी सी द स्कोर सो इट इज बेसिकली लाइक 183 व्हिच इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन कि मतलब इसके Yeah, बाद तो कुछ बचा ही नहीं है तो पीपल गिव अप इट देयरफॉर yeah. थ्रू द स्टैट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फर्स्ट इनिंग्स टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टीम हु शुड win the toss definitely needs to bat first. See, right now these days in modern cricket, every team has an analyst, and ये data भर भर के आते हैं. Right. There are few coaches who जो तजब्बु देते हैं इन सब डेटा को, कोई कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं देता और just अपने gut instincts के साथ जाते हैं. At the end of the day, how you play these sessions out is going to pave the way for the test matches. अगर आप पहला, we Indians are going as underdogs in this tournament. अगर न्यूजीलैंड सीरीज के पहले बोलते तो हमें हापर हैंड था, बट अभी वी आर गोइंग एज अंडरडॉग्स ओवर हियर. तो हमको सिर्फ पहले एक दो सेशन जीतने हैं टू पुट द प्रेशर बैक ऑन ऑस्ट्रेलिया. दैट्स इट. एंड लेट्स Right. प्ले दिस. It's a big series of 5 test matches, but it will all start with a single session, and that session is going to keep the pace. You rightly said कि फोर्थ इनिंग्स का जो डेटा निकल के आ रहा है 183, अगर आप वो पहले दो सेशंस में ही अपर हैंड सामने वाले को दे दोगे ना, तो देन यू विल ऑलवेज प्ले द कैचअप गेम. Exactly. What next for our viewers, Sushant? This is the entire data. I wanted to know about players to look out for because So there are some of three the players players. have crazy stats. Yep. Yeah, yeah, yes. So this is the data that you shared with me, Yashaswa, and this was your top player that you shared with me. And there are three players that we are. There will be multiple players who will be performing in this series and in these test matches, but three key players that we want you to keep an eye on. The first one is Manas Labuschagne. Now, पहली जो टेस्ट हुई थी इंडिया के साथ 2018 में, ही डिड नॉट प्ले दैट टेस्ट मैच. ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11. उसके Mhm. बाद जो टेस्ट मैचेस हुई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, he has played all those test matches. He has played in 6 innings, scored a great 519 runs at an average of 103, 3 centuries and 1 half century, and a not out score of 204. So this is for sure an hunting ground for Manas Labuschagne, and his wicket would be a very important one, especially at the Right. start of his inning. Right. So Yeah. Sushant, not just Manas Labuschagne, although his reputation speaks for himself. I was going through the lineup of Australia. There's Usman Mm-hmm. Khwaja, who is known to bat Correct. long. There's Steve Smith. Correct. If he stays on the pitch, he is known to bat long. Then there's Marnus Labuschagne. So Mm-hmm. some really big names who have performed very good in the Test matches, and this top order and the upper middle order is going to be the backbone of Australia's batting for the entire series. So, is it looking stronger than ours? For now, yes. Considering the form of Manas Labuschagne and considering the form of Steve Smith is not in that great a form, but he has always been performing well against India. तो Right, इसीलिए जो फर्स्ट अटैक होगा ना, that will play a major role. And there is one name which we Indians we surely cannot ignore and miss out. That's Travis Head, right, because वो फाइनल हो या कोई भी कंपटीशन हो, ही इज वन नेम विच डेफिनेटली कम्स इन आवर माइंड. सो ये बहुत ही अच्छी लाइनअप है, बट अगेन अ गुड बॉलिंग अटैक कैन प्रोबब्ली गेट देम क्रम्बल एट अ स्कोर ऑफ 150 और 160 एज वेल. सो अगर हम लोग उन पे प्रेशर डाले, दे विल गेट क्रम्बल डाउन एज वेल, बिकॉज
Steve Smith and Marnus Labuschagne have been in the spot for a long, long time. But अभी तक उनकी वो performer करके Steve Smith was sure he's a different breed altogether. But Marnus Labuschagne has been having an on and off kind of a season. So I think it is going to be about that pressure, that intense pressure. I just hope we don't start with the defensive field straight away and give them easy singles. Because Right. अगर defensive field होंगे तो यहाँ पे easy singles नहीं होंगे वो दो दो और तीन तीन रन होंगे because of the dimensions of the ground. Exactly. So The second player that we want to keep an eye on, let me share the screen with you, and then I'll leave the dais to you, Yashaswa, to speak about it. uh, Nathan Lyon, he's kind of a legend when it comes to Australia now, because over the years he has picked a lot of wickets. He is the talisman when it comes to spin bowling. Although Zampa came in, then Yeah, a lot of other spinners also came in, but he has been the key player over the years, and it's been consistently he is considered as the key. I mean, yeah, he's one of the leaders basically from Australia's think tank. So look at his stats from Perth. Although it is considered to be a very fast wicket, still in eight yeah. innings he has picked 30 almost 30 wickets, 29 wickets. So that goes to show his talent, and that's where I was talking about the snake cracks and all, because not just the purchase that he gets from the wicket. Uh, बाउंस भी है बाउंस भी मिलता है नेथन लियोन को बिकॉज ऑफ हिज एक्शन एंड देन द शार्प टर्न सो दीज टू आर वेरी लीथल कॉम्बिनेशंस एंड Yeah. this is the reason why I believe fourth inning total has been on the lesser side because of his inclusion, his performance for Australia over the years. No, absolutely agree with you. Nathan Lyon has time and time again picked up 5 wickets like it's a joke in most of the innings. He is a great experienced bowler, and to get 600 plus wickets in Test match is not an easy game. So Right. for sure, he knows how to use the pitch. He knows how to use each side of the wicket. He knows how Right. to use his angles properly, and those are great advantages. So Right. I think we have someone who doesn't care what he bowls. That's Rishabh Pant. He proved that in the last series. And we would want someone to take the game to him because that's the only way to counteract him. That's it. In the last series, Nathan Leon said that he was really worried about Cheteshwar Pujara because even though he was defending, he was coming outside the wicket using his legs and defending the ball. And it's been a long, long time we have not seen someone use their legs against a spinner, which was supposed to be our heritage. Exactly. Exactly. Very well said. So it is going to be a The good third battle, I player, believe. Leon versus yeah, Pant. it is for sure. The king we all want to roar. So सुशांत अब Yeah, सीन कैसा है ना yeah, post New Zealand series we heard rumors that this could turn out to be yeah. the last test series if certain senior players do not perform, and I Hmm. believe the X is on it is hanging on Virat Kohli a bit, not much, but I believe it is there because Kohli has a reputation of scoring big runs in Australia. He Yeah, has scored 11 hundreds over there. correct. So, and if you see the build up that Aussies have done, they have included Virat Kohli like anyone. He has been in every video of theirs, and if you have seen Amazon Prime की जो सीरीज है उसमें जस्टिन Yeah, लैंगर ने बोला है कि the aura of Virat Kohli is something else. He drives people, and with him, the entire stadium gets driven. So बहुत सारे factors है. It's not just the batting that people look up to, but the passion and aggression that Australians were known to have. He has that correct, in him a lot. correct. So he has scored 100 over here in Perth, and Yeah. we really want our king to basically kickstart the series with a good score, if not 100. Correct. I think Australia has played a great game over here because they are keeping Virat Kohli in their good books. He's being praised everywhere. He's being touted Right. everywhere. और इसको क्या है ना खून मूल he wants something to come up from the opposition कि कोई इसको चिढ़ा दे कुछ करे because अगर अगर आप इसको हंसते हुए देख लो फील्ड पे तो देन वो एग्रेसिव वाला विराट कोहली अंदर से बाहर नहीं आता मतलब
तो अगर कोई इसको चिढ़ा दे तो वो मजा आ जाए यार। तो पैट कमिंस थोड़ा थोड़ा वो काम कर रहा है, बट आई थिंक एवरीवन इज इन प्रेज, एवरीवन इज सिंगिंग हिज सॉन्ग, एंड आई बिलीव दिस इज द वे दे वांट टू बिड गुड बाय टू हिम। बट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। हमने इसको T20 से Exactly. बाहर कर दिया था और वो MCG में पाकिस्तान के अगेंस्ट नॉक आया। हमको लगा था कि विराट कोहली सेंचुरी नहीं करेगा, और उसने वर्ल्ड कप 2023 में जो बारी कही, उसने सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी साउथ अफ्रीका की 2003 के वर्ल्ड कप की। Right. नाउ एवरीवन इज पुशिंग हिम आउट। वो आया है ना कि 99, एक एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आया है कि 99% चांसेस हम जानते हैं कि विराट कोहली बीजेटी में फेल होने वाला है, बट that 1% is keeping us on the edge. So Right. we just hope he proves everyone wrong. यार एक बार है ना, वो कोहली वो डिजर्व करता है, उसको वो 100 स्कोर करते हुए देखना चाहते हैं, उसको वो भूख के साथ खेलना देखना चाहते हैं। वी वांट Right. हिम टू स्कोर रन्स एंड नॉट जस्ट स्कोर रन्स, वी वांट हिम टू स्कोर रन्स कंसिस्टेंटली। कि अगर बाय करे तो जैसे T20 वर्ल्ड कप को इन्होंने अलविदा किया है ना, उसी तरह से क्रिकेट को अलविदा करे ये लोग। On a एंड high note. दैट्स व्हाट, yes, on a high note, that's what we want to see. And this time if we win this BJT, it's going to be a hat trick. अगर ऑस्ट्रेलिया किसी से डरता है अपने घर पे, तो हमने वो Right. हक से डराया है उन्हें। इट्स ओनली इंडिया, बाकी किसी टीम ने दम नहीं रखा है। Exactly. तो let's see. So these are the three players that we are hoping for, and Hmm. you need to keep an eye on. I also think Yashasvi Jaiswal is something to look out for. Bumrah is going to be the most important factor. I think they might have a strategy to just play Bumrah out because वो एक टाइम पे 6 7 8 ही ओवर डालेगा। इसीलिए there are high chances कि Bumrah might set up other bowlers to pick up wickets. Bumrah might just set things up for everyone up. But then everyone has to pick themselves up and get a victory. अगर जो अजिंक्य रहाणे ने वो टीम को लेके गाबा में विक्ट्री ली, अगर वो टीम जीत सकती है तो कोई भी टीम जीत सकती है, सिर्फ जज्बे की जरूरत है। I think we have lost Yashasva over there, but कोई बात नहीं. He will join us back. These are the player that we have decided to keep an eye on. We have gone through different handles. We wanted to bring in the 11 players, the probable 11 that India is going to pick for this first test match. हमें दो lineups मिली है. Uh, we will share the lineup that we want as well. But as of now, दो lineups हमें मिली है. We will share both these with you. So the first probable lineup that we have is Abhimanyu Ishwaran opening along with Yashasvi Jaiswal, KL Rahul at number 3, Virat Kohli at number 4, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant, Nitish Kumar Reddy, Ravichandran Ashwin, Jasprit Bumrah, the captain of the team, Akash Deep, and Mohammad Siraj. So this is the probable 11, not the one that we think is going to be the scene, but this is what we have got from the internet right now, and we are sharing that with you. The second one, 9 players are the same. दो players जो change हो रहे हैं, वो है देवदत्त पटिकल comes in for Abhimanyu Ishwaran, and then we have Dhruv Jurel who is coming in for Sarfaraz Khan. We don't want to rule सरफराज खान out because उसने बहुत difficult conditions में इंडिया में परफॉर्म किया है, and he deserves a chance in abroad condition as well. But the think tank, let's look कि कल वो क्या decision लेते हैं. Normally if you ask us, हमें लगता है कि KL Rahul should open and Padikkal should be at number 3. It just keeps that left-right combination going. Abhimanyu Ishwaran is a great talent, but India A में अभी जो recently हुआ था, he is not in that great form. So it's great that he's with the team. But then Devdutt Padukal, for the way he has played for India A right now in Australia, and again in that warm-up practice match, I think should be in the starting 11. Dhruv Jurel, as we discussed in our last video, has the grit, has the determination, and we think for the same reason he might get a nod up from Sarfaraz Khan. लेकिन अगर सरफराज खान खेल भी जाता है, he completely deserves that spot, and that's how probably we think it's going to be. Yashaswa, welcome back. We were just discussing both the lineups of probable Right. 11, and 9 players same है. दो players में ही confusion है, एक तो देवदत्त Exactly. पडुकल या अभिमन्यु ईश्वरन, and the other one is Dhruv Jurel and Sarfaraz Khan. And I was just saying the same कि कल अगर कोई भी खेले they deserve a chance. At the opening we think it should be यशस्वी जायसवाल and KL Rahul because देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया ए के लिए बहुत अच्छा खेला है along with Right. and also in the warm up game.
Abhimanyu Ishwaran is a great talent, but India A में फिलहाल he has not been in a good forms. And looking at that stats, probably Devdutt Patikal might get the nod ahead of Abhimanyu Ishwaran. ध्रुव जुरेल और सरफराज खान के बीच में एक टाइट टॉस होगा बिकॉज सरफराज खान हैज बीन प्लेइंग रियली वेल बट ध्रुव जुरेल इज अ प्लेयर ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. तो जो भी जिसे भी चांस मिले प्रॉब्ली दे वुड श्योरली डिजर्व दैट. Correct. So along with this, Yashaswa, any parting thoughts for today? Uh, I believe inclusion of Devdutt Patikal would be a sensible option because left Mhm, and right, left right combination वाला जो हमने इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था, I mhm. believe they are going to go with the same mantra. And Dhruv Jurel, I'm backing to start because Dhruv Jurel is. I mean, I saw the stats and the articles from a lot of social media pages that he was practicing a lot in the nets Yeah. along Yes. with Virat Kohli. So, I mean, Virat Kohli and these two spent a lot of time, Dhruv Jurel, in the nets. So, this could be an indication that Dhruv Jurel might get a chance ahead of Sarfaraz. And I feel Nitish Reddy is the one to look out to because Yep. नाम काफी सुना है, hype काफी हो रहा है, and we will have like four fast bowlers in that case. One of the inclusions I believe is Harshit Rana. वो रहेगा कि Mhm. नहीं in comparison to Akashdeep? I believe Akashdeep should be given a chance because he comes closer to Shami than Correct. Harshit Rana for now, Yeah. Yeah. and he has some sort of like test experience, so to back him up. तो ये एक रीजन है, बट लेट्स सी अंडर गौतम गंभीर इन केकेआर हर्षित राणा परफॉर्म, so Correct. probably this could be a reason why he has included him for the Australia tour. But a lot to look out to in terms of how things are going to be, what toss brings up for us. So करेंगे सारा कवर. आज थोड़ा सा वीडियो ज्यादा हो गया, but Mhm. we are going to bring in another video tomorrow where we are going to discuss the entirety of day one, test one at Perth, and we're going to break down everything session by session to see who has excelled, who has performed well, and who hasn't. So a lot to look out to, and Sushant definitely is going to bring in his analytics game to enlighten this entire atmosphere to make things easier for everyone. So this is what I feel, and keep believing the that India is going to perform well because belief is very important. Belief नहीं रहेगा तो Yeah. I believe क्या ही मतलब है देखने का. तो Absolutely. back team India, and it's a big series. थोड़े बहुत सेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, बट कुछ सेशंस जो अच्छे रहेंगे वो मेमोरेबल रहेंगे. Correct. So thank you guys once again for listening to us and can't wait for this exciting chapter to start along with you guys. And if you haven't subscribed to our channel yet, please it's a kind request. Please subscribe, comment, and let us know how we can improve from here onwards. Thank you so much, guys. Thank you.